Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 15, 16 and 17 of trial balance from Intermediate First Year textbook. Now let us begin with our problem number 15, that is prepare trial balance of Shashidri from the following balances as on 31/12/2016. So immediately after reading this we will write our heading, that will be trial balance of Mrs. Shishadri as on 31/12/2016. So the first item is opening stock. ये हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओपनिंग स्टॉक, द अमाउंट इज ₹10,000. सेल्स इज अवर इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, द अमाउंट इज ₹30,000. एंड आफ्टर दैट क्रेडिटार्स इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. एंड आफ्टर दैट द अमाउंट इज ₹10,000. कैश इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. Cash, the amount is ₹10,000. And after that purchases is our expenditure, expenditure का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, द अमाउंट इज ₹20,000. एंड आफ्टर दैट डेटार्स ये हमारे एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, डेटार्स, द अमाउंट इज ₹20,000. एंड आफ्टर दैट सैलरीज इज आवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट इज ₹5,000. एंड आफ्टर दैट द लास्ट आइटम इज कैपिटल, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, द अमाउंट इज ₹25,000. एट लास्ट वी नीड टू डू टोटल. जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 65,000. हियर द टोटल विल बी 10, 10, 20, 60, 65,000 ऑन द डेबिट साइड. We are done with our problem number 15. Now let us move towards problem number 16, that is prepare trial balance of Bhagya Lakshmi. डेट नहीं दिया, so just we need to write the name. हेडिंग में सिर्फ नेम आता, MRS, Mrs. भाग्य लक्ष्मी. BHAGYA, भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, मिसेस भाग्य लक्ष्मी. एज ऑन डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो एज इट इज़ हम कुछ भी नहीं डैश बोल के लिख डालेंगे. देन द फर्स्ट आइटम इज बिल्स रिसीवेबल, दिस इज अवर एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, द अमाउंट इज ₹18,000. एंड आफ्टर दैट कैपिटल, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट इज ₹58,000. And after that sales is our income, income का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, द अमाउंट इज ₹78,000. एंड आफ्टर दैट मशीनरी इज अवर एसेट, ठीक है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, मशीनरी, एंड द अमाउंट इज ₹39,000. एंड आफ्टर दैट बिल्स पेबल, दिस इज अवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बिल्स पेबल, द अमाउंट इज ₹45,000, sorry 11,600 is the amount, 11,600 is the amount. Purchases is our expenditure, expenditure का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, purchases, the amount is ₹45,000. and after that furniture is our asset, asset का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, furniture, the amount is ₹45,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. डेबिट साइड का टोटल देखेंगे हम कितना होता है, 40, 40, 80, 9. नाउ वी आर डन विद द लिस्टिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. द लास्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टोटल. जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 1,47,600 एंड 1,47,600 ऑन बोथ द साइड. ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड. नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम नंबर 17, दैट इज prepare trial balance of Kasturi from the following balances. So Mrs. Kasturi as on 31/12, 31/3/2018. Now let us continue with problem number 17, that is prepare trial balance of Kasturi from the following balances as on 31/3/2018. So immediately after reading this, we will write our heading, that will be trial balance of Mrs. Kasturi as on 31/3/2018. पहला काम हमें क्या करना है, जैसे रीड द आइटम, आइडेंटिफाई द आइटम, देन
पोस्ट इट ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. कैपिटल, द अमाउंट विल बी 1,70,000. एंड आफ्टर दैट फर्नीचर, ये हमारा एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. फर्नीचर, द अमाउंट विल बी 30,000. एंड आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स दिस इज अवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. क्रेडिटार्स, द अमाउंट इज ₹40,000. एंड आफ्टर दैट कैश, दिस इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. द अमाउंट इज ₹50,000. देन सन्ड्री डेटार्स, डेटार्स इज अवर एसेट, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. डेटार्स, द अमाउंट इज 50,000. एंड द लास्ट आइटम इज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. बिल्डिंग्स, द अमाउंट इज ₹80,000. एट लास्ट वी विल डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. क्रेडिट साइड कितना है 1,70,000, तो 2,10,000 विल बी द टोटल ऑफ क्रेडिट. 2,10,000. एंड here also let us see 50, 50, 80, 1,80,000, 2,10,000. So 2,10,000 will be on credit side. We are done with the problem number 17. Let us see problem number 18. Prepare trial balance of Sudha from the following particulars. So immediately after reading this, we will write the heading trial balance of Miss Sudha. As on, what is the date? Date इधर नहीं दिया, नहीं दिया तो अभी नको लिखो, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. Opening stock, the amount is ₹22,000. and after that bills payable is our liability, liability का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा. bills payable, the amount is ₹4,000. and after that bills receivable is our asset, इसका डेबिट बैलेंस रहता, we'll write it on the debit side. bills receivable, the amount is ₹4,400. and after that purchases is our expenditure, expenditure का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. purchases, the amount is ₹16,000. and after that return inward, अब ये return inward है क्या? if the customer is returning goods to us, customer हमारे रिटर्न कर दे रहा, तो ये return inward है. return inward सेल्स रिटर्न रहती है हमेशा, और सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, दैट इज 400. रिटर्न इनवर्ड, ये क्या है? सेल्स रिटर्न, द अमाउंट इज 400. परचेजेस, फिर परचेजेस आया, आई थिंक कुछ ना कुछ एरर है ये प्रॉब्लम में. विल डू द सेम, जैसा क्वेश्चन में दिया हम वैसे प्रोसीड करेंगे. 2 बार परचेजेस अपीयर हो रहा, अभी 2 बार ही लिखो. सो दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. परचेजेस, द अमाउंट इज ₹20,000. एंड आफ्टर दैट सेल्स, सेल्स इज अवर इनकम, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा. सेल्स, द अमाउंट इज ₹24,400. एंड आफ्टर दैट रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. परचेज रिटर्न, द अमाउंट इज ₹600. एंड आफ्टर दैट कैपिटल इज 33,800, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. कैपिटल दैट इज 33,800. नाउ एट लास्ट व्हाट विल डू, विल डू द, नाउ वी नीड टू डू द टोटल. ठीक है, जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे द आंसर विल बी 62,800. सिमिलरली क्रेडिट साइड का भी 62,800 आएगा. and the trial balance is agreed. From this we have completed problem number 18. In the next video we are going to deal with problem number 19 and 20. Thank you. Stay connected with RANS, the Institute of Commerce.